My namaskar and pranam to all. A very warm good evening to everyone present here. I welcome all the registered participants and viewers on our social media pages to our today's inaugural session of the 3-month preparatory course for UGC NET aspirants. This course is being organized by Heritage Society. At the outset, let me welcome our chief guest, Professor Vasant Sinde sir, former Vice Chancellor of Deccan College Postgraduate Research Institute, Pune, and our guest of honor, Dr. B.R. Mani sir, former Vice Chancellor, National Museum Institute, and Director General, National Museum, New Delhi. Thank you so much, sir, for taking out time and sparing with us on this very inaugural session. This course is intended to provide an intensive training and guidance to all the UGC NET aspirants, mainly in three subjects: history, archaeology, and cultural studies. The registered participants will be guided by a pool of experts and renowned academicians and historians, and will be immersed in a 3-month guidance course. Our registered participants will also join this session in our today's inaugural session of this course, UGC NET Success Mantra, as it is also a great chance for them to boost up and interact with our distinguished uh, speakers and our chief guest today. Our session will formally begin with an introductory remarks by Professor Anantastos Dwivedi sir, which will be followed with the inauguration and blessings of Professor Vasant Sinde sir and Dr. B.R. Mani sir. After this, the registered participants will be allowed to connect with our distinguished speakers, our chief guest, and our guest of honor today, so that they can satisfy their curiosity and motivation regarding UGC NET uh, upcoming exam of in 2022 June. So, and then at the end, the session will close with a vote of thanks by Minal ji. Not taking much time, I request Professor Anantastos Dwivedi sir, Director General Heritage Society, to kindly begin the session with an introductory remarks and introduce our guests with the layout of the course. Thank you, sir. To Professor Anantastos. थैंक यू वेरी मच आजाद जी। आज हेरिटेज सोसाइटी के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे दोनों गुरु आशीर्वाद देने के लिए हम हमारी इस इनिशिएटिव को, हेरिटेज सोसाइटी परिवार की इस इनिशिएटिव को हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। भारत या भारत के बाहर तमाम वे विद्यार्थी जो आर्कियोलॉजी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वे सभी आपसे सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपसे इंस्पायर होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए लगातार उत्सुक रहते हैं। आप दोनों को हेरिटेज सोसाइटी के पूरी समस्त परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। यह हम सभी जानते हैं कि हेरिटेज सोसाइटी वर्चुअली ऑनलाइन आयोजन में अलग अलग विषयों के ऊपर लगातार आयोजन करती रही है, जिसमें भारत के और कुछ विदेशों से भी हम लोगों ने विद्वानों को इस मंच पर आमंत्रित किया। कोरोना काल में लगभग 400 से ज़्यादा वर्चुअल ऑनलाइन लेक्चर्स हेरिटेज सोसाइटी ने अपने विशाल परिवार के सहयोग से आयोजन करने में सफल हो पाए। उसी का परिणाम हुआ कि भारत के अलग अलग हिस्सों से, गांवों से, जिलों से, कस्बा से, पंचायत से लोगों की रुझान, लोगों की आस्था हेरिटेज सोसाइटी के प्रति विकसित हुई और उन विद्यार्थियों का लगातार यह सुझाव आता रहा कि हम लोगों के विषय के लिए आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, म्यूजियोलॉजी इत्यादि विषयों के लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ताकि हम लोगों का रेगुलर क्लासेस हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से हो सके। उसी मिशन के तहत उन्हीं की बातों को हम लोग आगे करते हुए इस अभियान में हम लोग लेके आए हैं और हम लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल से हेरिटेज सोसाइटी ने हेरिटेज सोसाइटी सक्सेस मंत्रा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जो अभी वर्तमान में जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और अभी हम लोग इस विषय को प्रारंभ में फर्स्ट बैच जो हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर के फर्स्ट बैच को हम लोग इसको ट्रेनिंग देंगे
और उसके बाद धीरे धीरे अन्य विषयों की तरफ भी हम लोग जाएंगे जो हेरिटेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है कि एक समय में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन कितना व्यवसायीकरण हो गया है, एजुकेशन में अब उस तरह की जो एस्टेब्लिश करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, तो एक उसके प्रति उनकी एक इकोनॉमिक सोच होती है, उनका एक अपना बिजनेस रहता है, उसका अपना एक माइंडसेट रहता है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग। लेकिन हेरिटेज सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमको अपना एक विषय विषय का विस्तार देना है, उस विषय को अधिक से अधिक लोगों को उस विषय के प्रति आकर्षित करानी है, उनको जोड़ना है। हम सभी जानते हैं पूरे भारत में बहुत मिनिमम अगर देखा जाए तो संख्या वाइज आर्कियोलॉजी पढ़ने वाले 1 लाख बच्चे भी नहीं है। 1 लाख बच्चे भी आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इतनी बड़ी आबादी है। बाकी सभी विषयों के प्रति देखते हैं कि उनके उनके काफी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में है। तो हम कैसे अपने विषय के आर्कियोलॉजी विषय को, इंडियन कल्चर के सब्जेक्ट को, म्यूजियोलॉजी के विषय को मैक्सिमम संख्या में उनको हम लोग जोड़ पाए, उसके लिए यह गाइडेंस कोर्स मेरे ख्याल से लगता है बहुत उपयोगी साबित होने जा रहा है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इस समय को न लेना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि हेरिटेज सोसाइटी एक एक लेवल पे ऐसा महसूस करे, एक समय ऐसा आए कि हेरिटेज सोसाइटी उस लायक बन जाए आप लोगों के सहयोग से कि अपने विषय को विस्तार देने के लिए हम हर वो काम करने में सफल हो जाएं कि ताकि किसी भी तरह का शुल्क हम लोगों को विद्यार्थी से लेने की जरूरत नहीं पड़े। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग उसको लेके जाएंगे, और आज भी हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि बहुत ही बेहतर सुविधा, बहुत ही कम से कम खर्च करके विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा बोझ ना हो उनके प्रति, जो सक्षम है वे देंगे, जो नहीं सक्षम है उनको हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना किसी तरह का शुल्क हेरिटेज सोसाइटी को दिए आप इस कोर्स में एडमिशन लें, और आने वाले समय में आप नेट प्रिपेयर करें, नेट क्वालिफाई करें, जीआरएफ क्वालिफाई करें, पीएचडी करें, फिर कल के डेट में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स में आप आगे बढ़ें। इसी इसी उत्साह के साथ, इसी आशा के साथ हेरिटेज सोसाइटी का यह विशाल परिवार इस इनिशिएटिव को आज शुरू करने के लिए हम अपने दोनों गुरुदेव को से निवेदन करते हैं कि इसके अपने आशीर्वचन से इस इनिशिएटिव का उद्घाटन करें और हमारे तमाम प्रतिभागियों को, पार्टिसिपेंट्स को, विद्यार्थियों को आशीर्वाद दे कि वे अपने इस मिशन में सफल हो सकें और हम सभी का अपने विषय में रोशन कर सकें। आप सभी को एक बार पुनः सादर प्रणाम, आप दोनों गुरुओं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं और इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए आजाद जी से निवेदन करता हूं। आजाद जी प्लीज। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर. Now it is my pleasure and my gratitude to Professor Vasant Sinde sir. I would now like to welcome our chief guest sir to kindly inaugurate this UGC NET Success Mantra course and motivate our students with their blessings. Over to you sir. Thank you very much, Ajad. I am extremely happy to connect with this society again. This Heritage Society is doing excellent work, and particularly in reaching the knowledge to the common people, to the young generation. And this is a very, very important initiative, rather innovative initiative that they have taken, because a lot of students aspire to become university professors, and one of the important qualifications required is the NET or SET, qualified test. And I'm sure that a lot of students who opt for this, they generally are confused sometimes. What questions are generally being asked there, and what preparations we need to do. So they're sometimes they're confused. So since both of us, myself and Dr. Mani, we are associated with UGC functioning, and also I was part of the this national education test, this exam and paper setting. We can give you some idea about what are the
what is the inclination of the UGC? What type of questions are generally put in for the students? One thing is quite clear that generally the very difficult questions are not asked. The basic questions are generally asked in the exam. For example, I will start with what is the difference between history and archaeology. These type of questions are asked, and a lot of students get confused, and they do not know how to write precise answer for this. Google Chrome dah. The best Rồi answer ramai for this, tunggu. I think some people are their mic is on, so can you mute your mic so that there is no disturbance? So how do you answer this type of question? The simple answer, suppose, because you have to write briefly about this, so you don't have to explain what is the difference. So in simple term, you can say that the objective of both historians and archaeologists is one and the same. They're like two sides of the coin, same coin, because both of us are interested in understanding about our past, in reconstructing the past history, past life ways. So that is the objective of both. But the approach is different. Here, the archaeologists are using mostly the material culture, which is collected systematically, they're analyzed scientifically, and that data that we generate, that data is usually used for writing history. And the major portion of Indian history is covered by the period which has got very little or no maybe textual sources available. In India, the textual source start from 4th century BCE. Even though we have some writing system in the Harappan period, we do not know what is that writing system. We have not been able to decipher that writing system yet. So, for the last almost 2 million years, we have no written records. The historians are mostly rely on the written records, so they have limitations. They can start writing history from 4th 3rd century BC onward, and not prior to that. So the archaeologists usually collect the data. The sources that we use is mostly material culture that we collect. And that the beginning of the Stone Age now, the lower Paleolithic in the Indian subcontinent, is going back to almost 2 million years, that is 20 lakh years. So from 20 lakh to almost 4th century BCE, we do not have written records. So if you want to reconstruct the history of that particular period, you have to rely strictly on the data that we collect, material culture that we collect from archaeological sites. So in short, if you have to reply this type of question, you can show that you can mention that the sources that are used by historians and archaeologists, they are different. The historians rely mostly on the written records, whereas the archaeologists rely on the material culture. So that is the main difference. So that the history in the western part, particularly in Mesopotamia, Egypt, their history starts from 3000 BCE, whereas our history is very late. Now we have some written records. For example, we have Rig Veda, for example, that is considered the earliest maybe textual source available in the country. Then we have a lot of Puranas, a lot of epics also, Ramayana and Mahabharata. But the problem we identify or using the data from these sources is that we have a lot of limitations. We do not know when these texts were written. We have no clue about them. So that is one thing. The dating is a real problem. Secondly, when exactly these texts were written, there are various theories. Some say that Rig Veda, the earliest text was written maybe 3000 BC. Some scholars say that maybe it is around 2500 BC. Some scholars say maybe it is around maybe 1500 BC. There are so different opinions. Nobody could arrive to one consensus, mainly because of lack of data on this particular respect. So
the data which is there, which are, these texts are full of information, but sometimes, we are not able to use that for writing history because of these limitations. We do, of course, use sometimes, but there is a lot of limitations on the use of this particular source. So that is one part. Secondly, the problem in the textual source, whether we are talking about the earlier source or we are talking about the classical source from maybe 3rd, 4th century BC onward, which is actually the text, which is useful for writing history. So the problem with the earlier text is that, or even in the later or the classical text, is that there is a lot of exaggeration written in the text, because most of the texts are created on the instruction of the rulers. They are mostly for, maybe around the rulers only. They talk about the ruling families and their achievements only. They do not talk about the common people. So we do not get, much information about the common lifestyle, or we do not find the history of the common people in that. So what we have is the history of maybe a particular class only, maybe the royal class, and a lot of things written there are always exaggerated. So we do not get, clear idea about the status of maybe social condition, economic condition, religious condition of that particular period. So that is a problem, in fact, in the textual sources that are available. But that in 1980s, a very, very important novel method was adopted by one Professor R.S. Sharma, Ram Sharan Sharma, who died at a very, very ripe age of almost 100 years, 99 plus. And he, in fact, passed away in his house in Patna only. A great scholar, he served in Delhi University. And in 1980s, he introduced a very, very important research methodology. Now, that in the history is so boring. The history, which I learned maybe around 50 years ago, the same history I taught to my students, I don't see any kind of maybe, excitement because of, the same repetition in the history. The history, which is being taught my students now, it is also, the repetition of the same thing. We do not find much new innovation in writing history. But if we can follow the path shown by Professor R.S. Sharma, perhaps we will be able to write correct history. So you might find a lot of questions on these also. So what he did, in fact, I'm just giving you some examples so that you can extract what is important for you from this. So what he did, we know that all of us know that the history of the Guptas is generally described as the golden age in ancient Indian history. And the history of the Guptas is written mostly on the textual sources available. We have a lot of maybe classical literature of that period. We have a lot of golden coins, particularly Samudragupta had issued golden coins. Then, we also find some development in art, architecture. So from this, the general impression that we get, all of us, is that, that it was a very flourishing phase. But then, what R.S. Sharma did, in fact, Professor R.S. Sharma, now we have generated a lot of archaeological data for this particular period also. Now let me tell you also one thing, which you should know, that the archaeologists do not limit themselves only to the prehistoric period, only for the period for which there is no written records. But we also deal with the historical period, early medieval, late medieval, and we come up to the almost modern age, up to the industrial era. So we deal with all the periods, and now we have different branches. For example, we have prehistoric archaeology, which deals with the maybe Stone Age period. We have protohistoric archaeology, which deals between between the beginning of settled life and the historical and advent of the historical period. Then we have historical archaeology,
which deals from maybe historical period up to the early medieval period. Then we have medieval archaeology, and we have also industrial archaeology. So we deal with all these, and we also generate a lot of sources. So here, we have choice now for the period onward, maybe 4th century BC onward. We have at least two sources available. And exactly this is what Professor R. A. Sharma did. He used the archaeological sources to understand the status of that particular period, the so-called golden age of Indian history, the Gupta period. So he compared two periods intentionally, the Kushan period earlier and the Gupta period also. And he started looking at the number of sites in the Ganga plain, because the concentration of the Gupta dynasty was mostly in the Ganga plain, mostly north of Narmada. So he found that there are large number of Kushan sites. Dr. Mani can tell you also. There are large number of Kushan sites discovered in the Ganga plain. Compared to that, there are few maybe Gupta period sites. So this is the beginning that he started asking the question. Now he said that if it was a golden age, does it really reflect in the archaeological data? It is not, because if it was a golden age, we do expect large number of settlements, much more in number than the Kushan sites, but that is not the case. Secondly, he also noticed that there are very few pure Gupta period sites. At most of the places, now we find the Gupta levels above the Kushan levels. So wherever Kushan made settlements, Guptas have continued there. They established the settlements on top of that. There are very few pure Gupta period sites. So again, he found out that why the spots which were selected by the Gupta, by the Kushan period people, why Gupta people have used the same spots. Started asking this type of questions. Then also a lot of Kushan and the Gupta period sites have been excavated in North India. And the remains that we find, they also speak. In fact, we do find very well made structures, large spacious structures in the Kushan period. Kushan people have they have built their own building material, they have created their own building material. Then we can see the prosperity in the number of structures, in maybe quality and quantity of the structures in the Kushan period. So that reflects the economic condition, the picture of that particular period, and it gives impression that it was really a prosperous period. Now, what is the evidence from the Kushan, from the Gupta levels? Now, we do not find such a large structures in the Gupta period. They are, very flimsy structures, we find. Secondly, what is important is that when Gupta people made the settlements on top of the Kushan levels, they always knew that people were living below. So they started digging in the ground, and they took out the bricks from the Kushan level, and they have used those bricks for constructing their own structures. So this is the overall situation. We have some sites where where we can see the prosperity, but that prosperity does not speak about the common history of that particular period. At most of the sites, this is the condition. The material culture found, even the terracotta art was well developed in the Kushan and Shunga period, and Gupta people have just carried forward. We do not find the abundance of maybe jewelry and other material culture in the Gupta period compared to Kushan and Shunga period. So that led Professor R. S. Sharma to rethink about the reconstruction of the Gupta period. So he started asking question whether does really Gupta people, Gupta period, does it really reflect the golden age? And his answer was no, because in the archaeological data, and we consider archaeological data as more authentic because we do not see any kind of exaggeration in that. The real picture is reflected in the archaeological data. And he found out that the material culture is not supporting
the hypothesis of a golden age in the maybe Gupta period. And he said that if at all we want to consider golden age in ancient Indian, ancient Indian period, it should be Kushan period and not Gupta period. So people may not agree with his conclusions here. Conclusion is not important. Now, what is important here is the research methodology that he introduced. It is very, very essential and very, important that wherever it is possible, when you have option of different sources, you should use all the different sources available and don't rely on any particular source. So that is very important, and he showed that, in fact, through his research. So conclusion here is not important, but this is how one needs to do. So this is one way that he has shown, in fact, how history can be reconstructed. Now, second part of our Indian history, the second problem, rather I would say, is that our history writing was started by the Britishers. They established, the Asiatic Society in Bengal in 1784, and the founder of that, his name is what is that? Okay, I'll just tell you. But the founder of that, now he was very visionary. And when he came here, he came here as a administrator. He had a maybe judiciary background. But when he came here, he realized that if you want to understand, if you want to really control, the Indian maybe people, or you want to establish control over India, then it is necessary that we understand their language and we understand their culture. So for this purpose, he started this Asiatic Society, and then of course subsequently a number of maybe scholars got associated with that, and that is considered to be the systematic writing of Indian history. But the Indian history was written by the Britishers from their point of view. We do not really find a lot of Indian scholars writing independently. But there are maybe 2 3 important maybe developments that I would like to mention. The first important development, which is very important because one can learn a lot from that development. Sir Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India, he became Director General in 1863. And what he did, in fact, maybe in 1800s and 30s and 40s, Alexander Cunningham, he also showed a way of writing history. So, he studied the Buddhist texts available. He also studied, some of the foreign travelers' account, particularly the travel account left behind by the Chinese scholars, Fayan, Huinsang, etc. He studied them. And he made a list of the sites mentioned in this text. And then, what he did, in fact, he actually used this data for identifying number of archaeological sites. So that is a really very, very important research methodology that was introduced by him. And he succeeded, in fact, in locating number of sites in the eastern part, in Bihar and parts of Jharkhand. And that is how he showed, in fact, the way. But unfortunately, he was not followed. So if you really want to really understand the methodologies, the important events in Indian history writing, so certainly you can make you can pinpoint this particular event. So that is one thing which is very, very important. Secondly, I would also like to mention the approach adopted by Professor B.B. Lal. I'm sure that all of you know about Professor B.B. Lal. He has just entered into 100 years. So we are happy that we are celebrating centenary year for Professor B.B. Lal, and he's still very active. So in 1950s, maybe 52, 53, he formulated a project, a famous project on Mahabharata, and he also did the same thing, in fact. But he went one stage further. He studied the location of some of the important sites mentioned in Mahabharata. He located sites like Hastinapur
Ai Chatra Indrapras, and maybe even Ayodhya was also identified by him, even though Ayodhya is more related to Ramayana period. But he carried out, he identified them first on the basis of location provided in the text, and then he carried out actual excavation at except Hastina, Aichatra. Aichatra was excavated by Ken Dixit, not the present one, the Rao Badar Ken Dixit, and at all the sites, Indrapras, the older part of Delhi, then Hastinapur, Aichatra, they found one culture which was quite common. Now, why I'm telling, because this is also important part of the research methodology. There may be maybe questions on this part aspect also. So he found one culture common at all the sites, and that culture was painted graver culture. So initially, Bibilal, he thought that culture, this particular culture, since it is common at all the sites, perhaps this represents the Mahabharata period. But then again, some people in fact, started, synthesizing archaeological and literary sources, and the literature talks, very different about, the Mahabharata period. It talks about, large number of maybe village, settlements, cities and towns. It talks about, big offensive and defensive implements, lot of maybe iron implements, chariots, etc. Everything is mentioned there. And the archaeological remains from the painted graveware was so poor. It was like maybe semi permanent settlement. They found mostly the semi permanent settlements like circular huts, very poor material culture, few fragments of maybe iron, etc. So then, people started criticizing the work done by Professor Bibilal. He said that no, we cannot really relate PGW, with Mahabharata period. So here again, conclusion is not important, but the methodology that was introduced by Professor Bibilal, particularly, his work at Hastinapur, is so important that now things are becoming really clear for us. So these are some of the important stages of development in the in Indian maybe scenario. And lastly, I will also explain in fact now that sometimes you will have to explain in the exam as to why one should study archaeology, or why one should study heritage, ancient heritage, or history. Now people will not really understand. They will think that we are wasting our time, we are wasting our money, we are wasting our national resources, etc., for this particular subject. And it happened in fact. One example I can give, I Deccan College, uh, Deccan College, of course all of this is the cradle of the Indian archaeology. Archaeology was started here, and Professor Sankar, the founder of the department, now he had developed this department with very painstaking efforts. And one day, one very prominent politician came to India, came to Deccan College, and Professor Sankale was showing him with great pride that he has developed this department as a world-class department. But then, before leaving, he said that what is the use of such departments? I think government should close down this department because government is only spending, and in return, government is not getting any revenue. So, what is the use of these departments? So here, what is important here that unless we tell the people importance of about our history, they will not really understand the importance of the subject. And this is the maybe duty of all of us, the professionals, those who are studying the subject. They should also make efforts in reaching this knowledge to the common people. So what we have to do that. So we people are not really interested only in the events. Of course, what we have done so far. We have constructed various events. What happened in the past? We always talk about the life of the people,
We all, maybe in the prehistoric, period, we talk about the life of the early farmers. We talk about the, Harappan history. We say that, Harappans built, the township, they were pioneers in this respect, etc. Then, when it comes to the early Sikh period, we talk about, these Ashoka, the Chandragupta Maurya's contribution, Ashoka's contribution, what they have done, what, maybe areas they conquered, how many, battles they fought, etc. What type of material culture was created by them. So this is the, history that, we have written. So this is mostly, the events of the history, the, history of the events. We are not really gone beyond that, and people want to know more about that. Now, firstly, what is the contribution India has made to the history of maybe India, to the history of the world? That is very important. People would want to know about that, and we can list down number of things. For example, the earliest evidence of well-planned towns come from the Harappan region only, from India only. So we have contributed immensely to the history of the world in this particular respect. We are taught, the world how to build, very, well-planned and hygienic cities. That is our contribution. Also, we are the first people in the world to develop maritime trade contact. At Lothal, we can say that, this is the earliest dockyard in the world. We can always claim that, we can always boast that, Harappans means we can always boast that this is our contribution. We are pioneer in shipbuilding, boat building. We are taught the world. This is the contribution. And then, when it comes to South Asia, most of the important, what we call as traditional knowledge system, most of the important crafts, now they were developed here, and that is considered to be a very, very important contribution. So we can talk about that. We can talk about the contribution made by our ancestors. That means made by us. We can tell the world that this is our contribution to the history of science and technology. Then next is very important, that what is the relevance of history or the heritage studies for the modern society. And it is very, very important. We need to tell these people, we need to convince that what is the relevance of the subject to the common people. And we can tell that we that more from the particular, from the Harappan times, there is a continuity in the what we call as the Indian knowledge system. For example, pottery making is considered to be one important knowledge system created by our ancestors. And that craft continues till today. There are a lot of communities, potters in India, who are producing the earthenwares by using the same old technology. But here, I would like to mention that they are not really able to produce that kind of fine pottery. If you compare the Harappan pottery and the modern pottery, it looks, obviously it looks same. Surface looks same, shapes are same, but the quality is different. The quality is completely different. So we know that the technology that was used by the Harappans was much more advanced. That technology is not anymore in use. So those who are studying the subject, those who are maybe studying on the reconstruction of the ancient technology, so they have the knowledge. So that knowledge can be passed on to the modern communities who are following this particular profession. So they will be able to produce much better pottery, which will have much better value, not only in the domestic market, but also in the international market. So they will gain. So that is the relevance. There are a lot of maybe smiths today, the coppersmith, goldsmith, ironsmith. All of them are following the same traditional method. So we can certainly we know that there are a lot of people who are, their subsistence is based on the traditional knowledge system. So we can always say that this is the knowledge system that was created maybe 5,000 years, but that knowledge system is still relevant. And lastly, I would like to give one example how the
ancient knowledge system is still relevant and can be used even today. Now, all of you must have heard the name of the site called Dholavira. Dholavira has become the 40th World Heritage Site, recently recognized by UNESCO. You know that Dholavira, the town planners today, they can learn a lot from this particular by studying this particular city. The Harappan people, they before locating the settlement there, city there, they studied the geography, geology of the region, and they knew that that there is always dearth of water there. The water scarcity was there because that time also, Dholavira is located in the Kutch part, in the remote part of Kutch, and that time also it was almost desert part, but they had to establish this particular city at any cost. So they knew that there is a dearth of water. So they created that facility within the settlement by using very, very simple but very effective practical technology. So what they did, they intentionally located the settlement between two rivers. One is Manar, the other one is Mansar. And in desert part, there is an occasional rainfall. And whenever there is a rainfall, these rivers get flash floods, occasional rainfall. So what the Harappans did, they dam both the rivers. They put series of check dams on both the rivers, and they diverted the entire water inside the settlement. And inside the settlement, they created underground water reservoirs, at different locations, and they were connected by each other by underground channel system. And they made sure that there is always running water available in the city. So by adopting this technology, they made sure that there is always water available in the city. That not only allowed them to sustain, but they continuously kept on developing at that particular site, that particular city, kept on flourishing. So this is the best example today. Between Dholavira and Rafur, which is the nearest town, modern town, the distance is 110 kilometers. There are hardly 5 villages, and people are not establishing settlements there because of dearth of water. But if this technology, Harappan technology, can be used today, sorry, what the Harappans did, in fact, now they harness the labor of the community for creating this facility. The maybe people of the city, they all got involved in the creation of this. And if that technology is adopted today in major part of Kutch can be Greenland. So that is how we learn from our ancestors. That is how some of the ancient technologies are so relevant. So this relevance part, if we can tell the people that it is not that we are only reconstructing the history, but the knowledge that we are creating is useful for the modern communities, modern society, and there we play a very important role. So once people understand that, people understand about the relevance of the subject, then definitely they will come forward, and they will participate in spreading the knowledge. We need to make aware these people about this, and if we can maybe pass on this knowledge, this type of knowledge, I'm sure that people will come forward, and we have done that very successfully at the site of Prakigadi. So before I close, I would like to mention that when we went there in 2011 and 12, people say that no, we will not allow you to excavate here because we generally know you people come here, you excavate, and you people get the publicity. What we get from this type of work. So why should we allow you? But then I kept persisting with the villagers. I kept holding meetings with them, and then slowly we started telling the relevance of the presence of archaeological site there, and how you can benefit. The government can undertake some development work, and how we can be benefited. And then people realize the importance of the presence of the archaeological site there. And today they want that the site should be should be properly developed. It should be an important tourist destination. And because they have understood the importance of the heritage sites, they have understood the importance of heritage, they are coming forward today,
and they're participating not only in disseminating the knowledge that we have generated, but also participating in the protection and conservation of the site. So that is how one has to work. So I think I'll stop here, and maybe after sometimes whenever we have questions, we can discuss about that. So maybe I will pass on to Azad, and he can proceed. Thank you very much. And invite Dr. Bia Mani sir, our guest of honor today. So your mic is off, sir. आप सबको मेरा नमस्कार। हेरिटेज सोसाइटी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जो 3 महीने के लिए ये कार्यक्रम आज प्रारंभ कर रही है। यूजीसी नेट सक्सेस मंत्रा, जिसका आज इनॉग्रल सेशन है, और इसके लिए मैं अपने पुराने छात्र डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी और उनकी टीम, आजाद और अन्य सदस्यों को बधाई देता हूं। शिंदे साहब ने काफी कुछ इनॉग्रल स्पीच में आप सब से चर्चा की, और जैसा कि मैं समझता हूं 1 घंटे का ही ये प्रोग्राम था और 1 घंटा लगभग समाप्त होने जा रहा है। तो ऐसे में अधिक समय मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि जो शोधार्थी हैं उनके साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, आर्कियोलॉजी एक मल्टी सब्जेक्ट है, जिसमें सिस्टर डिसिप्लिन्स और जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं, उनका समावेश होता है। और आर्कियोलॉजी एज सच ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, हमारे इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जब हम कहते हैं कि इतिहास, ये पुरातत्व के विभिन्न अंगों का हम अध्ययन करते हैं, तो इनमें फील्ड आर्कियोलॉजी के अतिरिक्त प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, साथ ही साथ न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, ये सारे विषयों का समावेश रहता है। आर्ट, आर्किटेक्चर भी इसमें होता है, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, आपके नेट ब्यूरो का जो सिलेबस है ये यूजीसी का, उसमें सारे मेंशन्ड हैं। उनका किस तरह से हम उत्तर दें, शिंदे साहब ने बड़े डिटेल में उनको समझाया है, उसमें मैं और अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आर्कियोलॉजी के साथ साथ जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं, जियोलॉजी है, जू आर्कियोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, डेटिंग मेथड्स से जिनका डेट्स का निर्धारण होता है, इन सब की मदद आर्कियोलॉजी में ली जाती है, और फिर जाकर के आर्कियोलॉजी एक बड़ा विषय बनता है। जो पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति
और पुरातत्व के पाठ्यक्रम में विषय दिए गए हैं जिन पर आपसे प्रश्न होगा नेट एग्जामिनेशन में। उन सब जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं उनकी उसमें चर्चा है। मैं सहमत हूँ प्रोफेसर शिंदे के बहुत सारे विचारों से, जहाँ उन्होंने ये बताया कि इस रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह से डेवलप की जाए। हालांकि उसमें मतभेद हो सकता है, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जैसे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की फाइंडिंग्स हैं या प्रोफेसर बी.वी. लाल की फाइंडिंग्स, उसमें मतभेद हो सकता है। लेकिन उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके विषय में प्रोफेसर शिंदे ने बहुत अच्छी बात बताई। इन दोनों जो 100 वर्ष के विद्वान, एक अभी हैं और एक अब नहीं है हमारे बीच। जैसे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने कुषाण और गुप्ता की बात की और ये सजेस्ट किया कि गुप्त काल से अधिक महत्वपूर्ण कुषाण काल को मानना चाहिए और जो गोल्डन एज है वो कुषाण युग में हो सकती है, क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो बस्तियां हैं उनमें डिटेरियोरेशन दिखता है, वो रीयूज ऑफ ब्रिक्स घरों में दिखती हैं और ये चीजें हमको कुषाण काल में नहीं दिखती, क्योंकि कुषाण काल में इनका प्रारंभ हमें दिखलाई देता है। लेकिन हम इस संदर्भ में ये नहीं भूल सकते कि जो हमारे विशाल मंदिर बने, जो मंदिर स्थापत्य डेवलप हुआ, जो हमारा शिल्प कला हमारी डेवलप हुई, मूर्ति कला डेवलप हुई, उस सब का श्रेय और साथ ही साथ कला के अतिरिक्त साहित्य, संगीत और आयुर्वेद और दूसरी जो मैथमेटिक्स और अन्य विद्याएं हैं वो कितनी अधिक डेवलप हुई गुप्त काल में, इसको अगर हम कंपेयर करें तो कुषाण काल उसके सामने नहीं टिकता। तो ये इस तरह के मतभेद हो सकते हैं। खुद शिंदे साहब ने भी अभी चर्चा की कि जो पेंटेड ग्रेवियर की बस्तियां हमको मिलती हैं, जिनको हम लाल साहब के हिसाब से मानते हैं कि वो महाभारत काल से संबंधित हैं, वो बड़ी पुअर किस्म की कंस्ट्रक्शन है उनमें। लेकिन जैसा कि हम मानते हैं कि हमारा ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, तो हम सिर्फ आर्कियोलॉजी को या सिर्फ लिटरेचर को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को, जो लिटरेचर कहता है, जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस आते हैं, उनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और हाल में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, खास तौर से डेटिंग मेथड्स में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का महत्व बढ़ रहा है। तो हमको ट्रेडिशन को, एस्ट्रोनॉमी को, लिटरेचर को, फॉरेन अकाउंट्स को, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को, इन सब को साथ लेकर के और फिर आगे बढ़ना आवश्यक है। एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा भी है, the world today has to choose between so many extremes that it is difficult to say what the present world would be like, say, after a quarter of a century. The past, with its miraculous achievements and emphasis on mass productions, should have paved the way to a greater human happiness, but far from it. It has barely helped mankind to devise new ways and means to a more complicated living. और ये जो complicated living है, इससे बाहर आने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति
और परंपरा के ऊपर ध्यान दें और उनकी स्टडी करें। और जहाँ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस नेट परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे उसमें किताबें, सोर्स बुक्स, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं और उनको अगर आप ध्यान में रखते हुए उनकी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो 3 महीने का आगे कोर्स चलने वाला है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के विषय में योग्य जो विषय के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे चर्चा होगी आपकी। उससे आपको बहुत ही सहायता मिलने की मुझे उम्मीद है। और मैं अधिक कुछ अभी ना कहते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ इंटरेक्शन हो सके। धन्यवाद। Thank you, sir, for your constant guidance and encouragement. Thank you so much, sir. I would now request our participants to kindly maybe confine yourself little brief. You may put your queries, your questions. You may go on with discussion and interaction with our distinguished guest, chief guest and guest of honor. Maybe participants may put their discussion in little brief, may one by one. You may raise your hand. सर, मेरा क्वेश्चन है जी। मेरा नाम शबीना बेगम है और मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। मनीष सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब वो अयोध्या एक्सकवेशन में थे तो उस टाइम पे क्या क्या एविडेंस मिल रहे थे सर? बस एक जानना था मुझे कि क्या क्या उस टाइम पे एविडेंस मिले एक्सकवेशन। जो एविडेंस हमें मिले थे उनके विशेष रूप से चर्चा मैं कर रहा हूँ। पूरा प्रवाह जो हमारा जर्नल निकलता है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का, उसमें एक डिटेल्ड आर्टिकल आ रहा है। और इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप हमारे कुछ इंटरव्यू किए हैं हेरिटेज सोसाइटी के साथ भी हुआ है, उनको देखें तो आपको उनके विषय में जानकारी मिलेगी। एक तो हमें एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर के एविडेंस मिले थे जिसमें जो पिलर्ड स्ट्रक्चर था और जिसके 50 पिलर बेसेस हम लोगों ने एक्सपोज किए थे। और हम जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद थी उसमें बहुत सारे पिलर्स यूज किए गए थे और बहुत सारे पिलर्स वहाँ बाद में अभी 2020-21 में जब क्लियरेंस का काम हो रहा था, क्योंकि अब तो मंदिर बन रहा है वहाँ, तो उस समय भी 50 पिलर्स वहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा हमें स्कल्पचर्स मिले, हमें टेम्पल के ऊपर जो आमलक वगैरह लगाते हैं उनके टुकड़े मिले, कर्ण आमलक या दूसरे जो टेम्पल के अलग अलग रिमेन्स होते हैं, जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो मिले। और इतना ही नहीं, ये तो 10वीं 11वीं शताब्दी और उसके कुछ बाद तक के पीरियड में टेम्पल के रिमेन्स हैं। उसके पहले के भी हमें अवशेष मिले हैं जो मौर्य शोक गुप्त काल के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। और सबसे अधिक आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अयोध्या का इसलिए रहा कि वहाँ जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है उसकी डेट जो हम अभी तक मानते थे कि 600 से 300 ईसा पूर्व है, वो डेट्स अब 1200-1300 ईसा पूर्व तक चली गई। तो ये अयोध्या में पहली बार पता चला और आगे चल करके इसी तरह की डेट्स हमको 10 दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के उत्खनन से भी मिली। तो ये उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है अयोध्या में। जी, थैंक यू सर। और सर बस ये कि वहां से कोई राम जी की मूर्ति या ऐसा कुछ स्कल्पचर मिला है?
नहीं, राम की तो कोई मूर्ति नहीं मिली है, लेकिन वहाँ जो मंदिर का लला वो है, द्वार शाखा है और उसके ऊपर लिंटेल है, उस पे लक्ष्मी की मूर्ति है, जो अपने आप में ये सजेस्ट करती है कि इसके अंदर विष्णु का मंदिर, और विष्णु का मंदिर होने का प्रमाण 20 भक्ति का जो बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ था जब 1991 में डिमार्केशन के समय, उसमें भी उसकी चर्चा है विष्णु हरि मंदिर की। तो विष्णु हरि मंदिर वहीं था या कहीं और था, ये सिर्फ उसी अभिलेख से मिलता था। अब उसके प्रमाण स्वरूप ये लक्ष्मी का ललाट बिंब रूप में अंकन भी प्राप्त हुआ है। जी, अभी एक बड़ा सुंदर प्रश्न आ रहा है सर, भाग्य लक्ष्मी राणा जी का, कि किसी प्लेस को हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट कैसे कहेंगे? देखिए, हाँ सिंधे साहब, ये जो डेफिनेशन जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट का, the archaeological site can be defined as a place where we find the traces of human activities. In simple language they can write like this. So this is the definition of archaeological site. और उसमें क्या होता है कि we have maybe when it comes to this Stone Age period, we have primary site, secondary site, and then from the earliest maybe from the Neolithic period onward, then we start getting proper the what we call as the habitation sites. So why we are getting only maybe traces of maybe human activities in the early stage, because they were in the hunting gathering stage. एक जगह से दूसरी जगह वो बार-बार जाते थे, उनका सेटल लाइफ नहीं था, इसलिए वो ये सिर्फ ट्रेसेस ही मिल जाते हैं आपको। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ का प्रॉपर डिपॉजिट मिलता है हमको, क्योंकि वहाँ एक ही जगह पीपल हैव स्टेड देयर फॉर मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज द डिपॉजिट इज फॉर्म, and the thickness of the deposit depends upon the duration of occupation, कि कितने साल उसको वहाँ ऑक्यूपेशन हुआ था, इस बेसिस पे उसका डिपोजिशन का हाइट तय होता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट का डेफिनेशन है। थैंक यू सर। पूनम जी से आग्रह है कि हम लोगों के जो आज गेस्ट हैं उनसे अपना परिचय देते हुए अपना नाम और यूनिवर्सिटी बताते हुए बात कीजिए, प्लीज पूनम जी। हेलो सर, गुड इवनिंग टीचर्स। गुड इवनिंग सर, मैं एमए फाइनल ईयर सीडीएल यूनिवर्सिटी से हूँ स्टूडेंट। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में से कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है और आर्कियोलॉजी की स्कोप कहाँ तक है सर? सिंधे साहब बताएं। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आर्कियोलॉजी करना है तो उसमें ये भी जानना जरूरी है कि आर्कियोलॉजी में जो डेटा कलेक्शन होता है उसके लिए हमको बाहर फील्ड वर्क में जाना पड़ता है, रिमोट प्लेसेस में जाना पड़ता है, हम उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। वहाँ जाके कुछ साइट्स मिलेंगी तो वहाँ एक्सकर्शन करना पड़ता है, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 महीने रहना पड़ता है। तो ये डेटा कलेक्ट करने का एक ये जरिया है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, अगर ये कर सकते हैं आप और एंजॉय कर सकते हैं तो आर्कियोलॉजी कर सकते हैं आराम से। जी सर। और आपको सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के अगर हिस्ट्री करनी है तो लाइब्रेरी में बैठ के आप हिस्ट्री कर सकते हैं। तो आप अभी डिसाइड करें कि आपको आर्कियोलॉजी करना है या हिस्ट्री करना है। लेकिन जो भी करेंगे आप, जैसे मनीष साहब ने भी बोला कि जो भी करेंगे आप, जो अवेलेबल सोर्सेस है, आप अगर हिस्ट्री करेंगे तो भी आपको आर्कियोलॉजी का सोर्सेस यूज करना पड़ेगा, और आर्कियोलॉजी करेंगे तो जैसे मनीष साहब ने बोला कि जो बाकी जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उससे भी डेटा जनरेट करना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजी मैं बोलूँगा कि आर्कियोलॉजी इज मोर एडवेंचरस। अगर आप एडवेंचरस इसमें लाइफ में इंटरेस्ट है तो आर्कियोलॉजी कर सकते हैं, या सिर्फ आपको रूम में बैठ के हिस्ट्री करना है तो आप हिस्ट्री कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। जी तो सर। आपको डिसाइड करना है अभी।
एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री विषय की पढ़ाई लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में होती है जहां ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है, लेकिन आर्कियोलॉजी की पढ़ाई बहुत कम यूनिवर्सिटीज में होती है। तो ये इसका एक कारण ये भी है कि आर्कियोलॉजी का उतना ज्यादा स्कोप नहीं है जितना हिस्ट्री का है। हिस्ट्री एज सब्जेक्ट पढ़ करके आप कॉम्पिटिशन्स में भी जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज या टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप दूसरे सर्विसेज में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी उसी को पढ़ना चाहिए जो, जैसा शिंदे साहब ने अभी कहा, कि अगर आपके अंदर ये भावना है कि आप जंगल पहाड़ में रहते हुए, घूमते हुए और डाटा कलेक्ट करके कुछ आगे अपने आप को डेवलप कर सकें। थैंक यू सर। मौसम जी से आग्रह है। सर, आई हैव मौसम अ क्वेश्चन। यस जी प्लीज अपना सर, अपना नमस्ते नाम, सर। यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए पूछिएगा मौसम जी। यस सर। सर, मेरा नाम मौसम महना है और मैं अभी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा हूँ, उड़ीसा से, कटक। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि ये है कि हम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को मतलब एक अलग अलग सब्जेक्ट तक क्यों पढ़ते हैं? मतलब क्योंकि दोनों ही हिस्ट्री पास्ट को ही डील करते हैं। देखिए, अभी जैसा कि मैंने भी कहा, शिंदे साहब ने भी कहा, आर्कियोलॉजी जो है एक सोर्स है टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो ये कहीं आपको सोर्स की पढ़ाई होती है सिर्फ आर्कियोलॉजी की, और जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो उसका स्कोप बढ़ जाता है, जिसमें आर्कियोलॉजी एक सोर्स के रूप में रहता है और दूसरे विषय भी उसके साथ आ जाते हैं। तो ऐसे में आप इसीलिए दोनों विषय अलग अलग चलते हैं। और जहां तक इंडिया का, अपने देश का सवाल है, यहाँ पे आर्कियोलॉजी नॉर्मली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। बहुत कम स्थानों पे, जैसे डेक्कन कॉलेज है, ऐसी जगहों पे आर्कियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट भी है। लेकिन नॉर्मली इसे यूनिवर्सिटीज में, अगर आप वेरियस यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब सुचिता बहेरा जी, प्लीज आपसे आग्रह है, बात करें सर से आप। सुचिता बहेरा जी, अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है। इसी बीच भाग्यश्री जी जुड़ गई हैं। भाग्यश्री जी, आप बात करें प्लीज सर से, अपना परिचय, यूनिवर्सिटी का नाम बताते हुए। भाग्यश्री जी प्लीज, आप अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम भाग्यश्री, मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। रॉक आर्ट, नॉर्थ छत्तीसगढ़ रीजन के रॉक आर्ट के ऊपर मेरा काम अभी मैंने स्टार्ट किया है। सर, मैं आप दोनों से, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप दोनों एक्सकेवेशंस में होते हैं तो उसके एक्सपीरियंस क्या है, वो हमसे शेयर करें। एक्सपीरियंस तो हर तरह के होते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। और मैंने तो सबसे मेमोरेबल सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो मेरा अयोध्या का है, जो एक पहला एक्सकवेशन था जो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं डिसाइड किया था और कोर्ट ने डिसाइड करके एएसआई को कहा कि आप एक्सकवेशन करिए। और वो भी एक्सकवेशन जब हो रहा था तो उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस लगातार बैठते थे। वो पूरा एक्सकवेशन जो संपन्न हुआ, वो अलग अलग जो पार्टीज कोर्ट केस में शामिल थी उनके सामने होता था। हर हफ्ते एक बार सुनवाई होती थी कि काम क्या चल रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या और ऐड करना चाहिए, ये हाई कोर्ट में सुनवाई होती थी। और पूरे साइट पे इतना अधिक
इंटरफियरेंस होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। कभी उनके सिक्योरिटी स्टाफ घूमता रहता था, कभी कोई वहाँ पे टेंट लगाया जाता था, कभी वहाँ कूलर पंखे लगाए जाते थे, जो नॉर्मली हम अपने एक्सकवेशंस में नहीं करते। जी लेकिन कोर्ट का आदेश होता था, इस आदेश के अनुपालन में तरह तरह के ये एक्सपीरियंस हुआ करते थे। तो जो वो एक अजीब किस्म का एक्सकवेशन का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। लेकिन इसी के अलावा कश्मीर में भी मैंने काम किया है। कश्मीर में बारामूला के पास एक साइट है कनिष्कपुर, वहाँ पे मिलिटेंट्स के बीच में हम लोगों ने काम किया। मिलिटेंट्स हमारे साइट पे आके बैठते थे, देखते थे कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे कुछ मेंबर्स थे, हालांकि मैंने उनको मना कर रखा था कि आप इन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग इतने इंथुजियास्ट थे कि वो उनसे डिस्कशन करते थे, और जैसे वो कहते थे हमें आजादी चाहिए, तो हमारे जो एक सज्जन थे उन्होंने कहा आपको किस बात की आजादी चाहिए, आपको तो हर चीज की आजादी है। तो इस तरह के भी डिस्कशंस होते थे। वो एक अपने में अलग ही एक्सपीरियंस था। शिंदे साहब कुछ बताना चाहते हैं एक्सपीरियंस? जी जी सर। नहीं, एक्सपीरियंस तो बताने के पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको सचमुच आर्कियोलॉजी करना है जी और उसमें ज़्यादा ये है कि आप एक्सकैवेशन एक्सपोजिशन करके एक प्राइमरी डेटा आप जनरेट करते हैं। तो जब जैसे मैंने राखीगढ़ी में जो डीएनए का डेटा जनरेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, एक सुकून देने वाला होता है। लेकिन आपको प्रिपेयर भी होना चाहिए कि आप ये काम करेंगे तो आपके फैमिली से आप 3-4 महीने दूर रहते हैं। आपको जो बेसिक सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती आपको कभी-कभी। तो इसके बावजूद भी काफ़ी गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके काम करते हैं और अपना प्रोफेशन बनाते हैं उसमें। तो इसकी तैयारी भी होना चाहिए कि ये नहीं सोचते लोग, कॉमन लोग सोचते हैं कि शायद ये पिकनिक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ही काम करना पड़ता है। उसमें पूरे दिन हम एक्सकर्शन करते हैं, फिर शाम को उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, रात को 12 बजे तक चलता है। तो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम चलता है। तो बहुत ही हार्डशिप होता है, तो करने की तैयारी होना चाहिए और आपको फैमिली से दूर रहने की भी तैयारी करना चाहिए। तो ये करेंगे तो आप अच्छी आर्कियोलॉजी कर सकते हैं और आपको अच्छे एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे जो सुकून मिलता है कि जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो नया डेटा एक मेमोरी और नया डेटा जनरेट करते हैं और वो डेटा आपको हिस्ट्री राइटिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ऐसा नहीं कि अवेलेबल डेटा है, उसके ऊपर हम काम करके हम रिसर्च कर रहे हैं और उसको हिस्ट्री राइटिंग के लिए यूज़ करें, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक डेटा आप जनरेट करते हैं, प्राइमरी डेटा जनरेट करते हैं, तो वो उससे आपको काफ़ी ये मिलता है, सुकून मिलता है और नेक्स्ट इसमें डिग में क्या मिलेगा आपको मालूम रहता है। तो एक क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है इसमें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको लगन से अगर इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमने ये बताया कि आपको क्या इसमें क्या डिफ़िकल्टी है, कैसा हमारा नेचर ऑफ वर्क होता है, ये सब बताया, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। थैंक यू सर। पूजा राव जी, अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है, आप अनम्यूट कर लें और सर से बात करें। सबसे बात करना संभव है नहीं, हम लोग अब बहुत जल्द 2-3 लोगों से बात करके आज का सेशन की तरफ, समापन की तरफ बढ़ेंगे। पूजा राव जी प्लीज। संबित में हुआ, मुकेश कुमार, शना खान, जिनके पास आवाज जा रही है। जो कोई भी हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं, जो भी मंच पर हैं, मुकेश जी, सना जी, संबित, पूजा राव। संबित में हुआ, प्लीज अनम्यूट yourself first, please. Sir, good evening all of you.
Sir, my name is Sambit Mishra from JNU University, Odisha. सर मेरा सवाल ये था कि सर हम एक यूनेस्को साइट कैसे ये करते हैं, क्या क्या देखकर, इम्पोर्टेंस क्या देखकर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाता है? मनीषा आप बोल दीजिए आप। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के निर्धारण के लिए एक नॉमिनेशन डोजियर सबमिट किया जाता है कंट्री के द्वारा, और उस नॉमिनेशन, जैसे अभी शिंदे साहब ने शुरू में बताया था कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे यहाँ। 40 में 7 नेचुरल साइट्स हैं और 32 कल्चरल साइट्स हैं और एक मिक्स साइट है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि इन साइट्स का जिनका हम प्रपोज कर रहे हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, उनका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू क्या है, और उसके लिए यूनेस्को ने 6 क्राइटेरिया कल्चरल साइट्स के और 4 क्राइटेरिया नेचुरल साइट्स के, कुल टोटल 10 क्राइटेरिया रखे हैं। और उन क्राइटेरिया में एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी साइट को ये मानने के लिए कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जैसा कि मैंने बताया, कल्चरली इम्पोर्टेंट साइट होना चाहिए, जिसका यूनिवर्सल वैल्यू हो, आउटस्टैंडिंग वैल्यू हो, उसका आर्किटेक्चर का, वहाँ की हिस्ट्री का, वहाँ के जो आर्कियोलॉजी का, वो कल्चरल साइट्स के साथ जुड़ा हुआ है। और नेचुरल साइट्स भी अपने में यूनिक साइट होना चाहिए। जैसे आसाम में काजीरंगा का फॉरेस्ट है, जहाँ जो अपने आप में अकेला ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में यूनिकॉर्न, राइनोसेरॉस गैंडे मिलते हैं। तो इस तरह के जो आउटस्टैंडिंग वैल्यूज हैं वो उनके साथ होने चाहिए। और उसके बाद एक डिस्कशन होता है, पूरे जो 167 स्टेट पार्टीज हैं उनका हर साल डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में डिसाइड होता है कि किनको वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया जाए। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर इसमें समाहित है, जो आपको समझ में आया। थैंक यू सर। Thank you, sir. There is a question coming from Mangaldeep Mondalji. He is asking, what are the professional opportunities after completing NET or PhD in archaeology instead of teaching? Shinde Sahab? Shinde Sahab is in the university system. He has been for a very long time. So I would suggest Shinde Sahab to take over this question. Shinde Sahab नहीं है क्या? Sir will possibly join in the meantime. Okay, then can you repeat the question once again? Mangaldeep ji is asking, what are the professional opportunities after completing NET or PhD in archaeology instead of teaching? Instead of teaching, one can join Archaeological Survey of India, or one can join some museum where the curatorial posts in the subject archaeology is there. So, and nowadays there are so many museums in the country which concentrate on art, architecture, archaeology, history. So that is another aspect. Then every state has got a state archaeology department. So it is possible that they can join there also.
So apart from teaching, these are the different areas where one can join. I miss my question miss हो गया मेरा. Shinde sahab, question was that I know, अभी पढ़ा मैंने question. ये instead of आपने जो बताया वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी है. अभी हमारे यहाँ जो हेरिटेज साइट्स का काम बहुत चलता है अभी. हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज मैनेजमेंट, काफ़ी प्राइवेट एजेंसी भी इसमें आ गए, तो उसमें भी काफ़ी अभी उसमें स्कोप बढ़ गया अभी. तो वहाँ भी आपको एक ऐसा म्यूजियम डेवलपमेंट्स काफ़ी हो रहा है, उसमें भी सब्जेक्ट के लोग लगते हैं. तो apart from teaching, apart from government jobs, you can also, maybe have your own firm. You can start maybe heritage management consultancy in that, conservation also. So there is a lot of scope now. The scope is increasing. जब हमने जो ज्वाइन किया था तब बिल्कुल स्कोप नहीं था कि हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, लेकिन अभी बहुत ही स्ट्रीम्स है कि जहाँ आप जा सकते हैं और ये कर सकते हैं. तो आप अगर किसी एक अभी जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है, जैसे हेरिटेज मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन, उसको भी करेंगे एडिशनली तो काफ़ी अच्छा आपका फ़ायदा हो जाएगा. म्यूजियम कोर्स करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा. तो ये कोर्स करने के सिर्फ आर्कियोलॉजी में एमए या पीएचडी या नेट करने से सिर्फ उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर कोई ऐसे कोर्स करेंगे, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी फिर. ओके आशुतोष जी, थोड़ा कैन यू फिनिश? मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा अभी. जी बिल्कुल सर. One question from my side, please. जल्दी एक क्वेश्चन प्रवीण जी, प्लीज एक क्वेश्चन जी. Yes, sir. Good evening, sir. Myself, Parveen Kumar, working as an assistant professor in Chaudhary Devlal University, Sirsa. Whenever I was doing my post-graduation from MD University, Rohtak, my teacher of archaeology, Professor Manmohan Kumar and Amar Singh, sir. And from that time, I am listening you and your lecture. So many time I listen you. Last lecture I listened, your lecture was on 100 years of on Harappan culture, 100 years of Harappan culture in Kurukshetra University, Kurukshetra. Yeah. Sir, actually, I have so many questions. I am happy to, first of all, thankful to Professor Ananta Sutosh Dwivedi, sir, who gave me chance to meet you on live session. And I have so many questions, but simple one question I am asking to you, please, if possible. You just declare that जो आर्यंस थे वो बाहर से नहीं आए. I mean जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी उसको आपने बना के आराकी गढ़ी में आपने प्रूव कर दिया कि हम लोग बाद में बाहर गए हैं, ना कि वो लोग यहाँ पे आए हैं. तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी और इस तरीके की जो थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, ये प्लीज आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं प्लीज सर? देखिए, इसमें आर्यन जो हमने देखिए, अगर लोगों के बारे में जानकारी करना है तो उनका अगर डीएनए हम टेस्ट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट और साइंटिफिक डेटा वही होता है. तो अभी लास्ट लगभग 200 साल से आर्यन इशू चल रहा है हमारे इंडिया में. और इसके बारे में जो लोगों ने आर्यन बाहर से आए इंडिया में, तो उन्होंने कुछ सॉलिड एविडेंस दिया नहीं. तो कुछ बोलते हैं कि कुछ ऑब्सक्योर रेफरेंस है, ऋग्वेदा में आर्य करके कुछ ये है. उस बेसिस पे इतनी बड़ी स्टोरी बनाना बहुत ये गलत है. तो अगर उन्होंने कुछ एविडेंस दिया नहीं, अगर जो हमने एविडेंस अभी साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट किया है, हालांकि वो एक ही स्केलेटल रिमेन्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे एक ही काफ़ी होता है. जैसे हम अगर चावल पका या नहीं पका वो देखने के लिए एक ही हम ग्रेन उठा के देखते हैं, वैसे ही डीएनए का है. तो उसमें हमको ये मिला कि इन लास्ट 10,000 years देयर वाज नो चेंज इन द जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, और जेनेटिकली प्रूव हो गया. अगर वो हम मानते कि बाहर से आर्यन उन्होंने अटैक किया तो दे वुड हैव एस्टैब्लिश अ न्यू जेनेटिक हिस्ट्री इन साउथ एशिया. वो हुई नहीं. सेकेंडली, जब बाहर से लोग कोई आते हैं, जब हम अमेरिका जाते हैं, हम लोग जाके सेटल होते हैं, तो हम अपने कल्चर वहाँ भी प्रिजर्व करते हैं. कल्चरल एलिमेंट्स हम लेके जाते हैं.
तो अगर सो कॉल्ड आर्यस अगर बाहर से आते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग, तो वो अपने कल्चर के लेवल्स भी यहाँ लेके आते थे. We do not have evidence for that also. So that means, that there is a continuity for last 10,000 years. And that continuity is very well reflected in the archaeological data, in genetic data now. And also we have done the facial reconstruction of people, of the Harappan people. और हड़प्पन लोग और यहाँ अभी के जो हरियाणा के लोग हैं बिल्कुल एक ही वैसे लगते हैं, तो उसी में भी कंटिन्यू दिखाई देते हैं. तो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि एक बाहर से लोग आते थे जाते थे, ये तो कंटिन्यूस हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बड़े पैमाने पे आक्रमण हुआ या बड़े पैमाने पे लोग आए यहाँ की एंसेस्ट्री उन्हें चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ किसी स्टेज पे. इसलिए हम मानते हैं कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो गलत है. दूसरी बात, हमने जब डीएनए का रिसर्च किया तो कुछ सैंपल्स हमको ईरान से और कुछ सेंट्रल एशिया से हमने सैंपल्स का भी डीएनए स्टडी किया. तो उन सैंपल में कि जो हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी साइट्स थे, वहाँ एक गोनूर साइट है तुर्कमेनिस्तान में, और ईरान में शारी सोख्ता साइट है, वहाँ स्केलेटल रिमेन्स मिले. वहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में हड़प्पन डेटा मिलता है, इसका मतलब हड़प्पन लोगों के उनके साथ संबंध थे. लेकिन जब हमने डीएनए स्टडी किया तो उन लोगों में हड़प्पन लोगों का जिन था, लेकिन उनके जिन हड़प्पन लोगों में नहीं थे. इसका मतलब हड़प्पन लोग पहले वहाँ जाने लगे और फिर रेसिप्रोकल मूवमेंट शुरू हो गया. ये एविडेंस हमको मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग डेटा है. तो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि शायद अगर कोई मानता है आर्यन लोग थे तो हम ये लोग आर्यन थे और हम ही लोग बाहर जाना शुरू किया. ये हमारा ये जो इंडिकेशन मिलता है हमारी स्टडी से, तो ये इंडिकेशन है वो. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा बीआर मनी सर से प्लीज. एक्चुअली सर मेरी पीएचडी अभी सबमिट होने को है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी. मैंने अभी आर्कियोलॉजी का डिप्लोमा नहीं किया है, मैं आर्कियोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूँ. तो इफ पॉसिबल क्या आप बता सकते हैं आर्कियोलॉजी का डिप्लोमा में मींस वर्किंग रहते हुए हम वो डिप्लोमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? आपको 2 साल की छुट्टी लेनी पड़ेगी और 2 साल लगातार आपको यहाँ रहना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में, जो कि मेरे ख्याल से शायद आपके लिए कठिन होगा. हाँ, अभी परमानेंट नहीं है तो सर ये मुश्किल होता है. बट आई एम विलिंग टू इन क्योंकि फ्यूचर देखेंगे. ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है. इसमें एक्सकवेशन का, एक्सप्लोरेशन का, कंजर्वेशन का, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के विषय में, इसमें 6 महीने तो आपके इसी के लिए चाहिए. बाकी तो उसके बाद एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो लेक्चर देते हैं, उसमें शामिल होना होता है. तो इसलिए ये आपको बीच में 10-15 दिन के लिए छुट्टी मिल सकती है, कभी आपको डिसर्टेशन तैयार करने के लिए मिल सकती है, लेकिन लगातार 15 दिन से अधिक छुट्टी आपको एट ए टाइम नहीं मिल पाएगी. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, नाइस टू मीट यू. Thank you, sir. And thanks to all the participants for their beautiful questions. I may now request Mrinalini Bhardwaj ji to kindly present vote of thanks. On behalf of Heritage Society, I would like to express my heartfelt gratitude to our eminent speakers, our chief guest, Professor Vasant Shindeji, former Vice Chancellor, Deccan College, PGRI Pune, our guest of honor, Dr. B.R. Mani, former Vice Chancellor, NMI and Director General, National Museum, New Delhi. They accepted our humble request and graced this platform of Heritage Society to inaugurate the session of Success Mantra Preparatory course for UGC NET. Special thanks to Professor Anantashutosh Dwivedi ji, Director General of Heritage Society, Patna, for taking this initiative and personally curating this course. A big thanks to our moderator of today's session, Azad Hind Gulshan Nandaji, Director BHRI, Heritage Society, and a huge round of applause and thanks to all the participants. And also a special thanks to Sanant, our
स्टॉप हो गया. Thank you, sir, and my thanks to all the participants, our eminent speakers, and Professor Anantashtosh Dwivedi, sir. Thanks to also to all the viewers who are watching us on different social media pages. Thanks to everyone. I may now take Thank you so permission much, from everyone, for our being here and inaugurating and participating in this inaugural session of UGC NET Success Mantra. Thank you all. Good night. Take care, everyone. thank you, Mrinal थैंक ji. यू. आजादीन जी, आपका नाम बहुत इम्प्रेसिव है. Thank जी you, sir. जी Thank you, sir. मैंने Okay, all 3 the बार best. पूछा था जब पहली बार उनसे बात हुई. अनंत जी आशुतोष, जी आजाद सर. और सब लोगों को ऑल द बेस्ट टू द सर पार्टिसिपेंट्स आल्सो. सब आशीर्वाद है सर आप दोनों का सर. जी Thank you, sir. चलिए सर. थैंक यू. Thank you, प्रणाम. everyone.